Okay, so let me share the screen. Okay, so guys, today we are here to, here with a very specific purpose. Okay, yes, Anirudh, no problem. Take 2 minutes. Harsh, please turn on your camera. Okay, we are going to see each other. Ooh. All right. So, what is WAT? All right. So, WAT, written ability test, is the okay in MBA exams, right? And it's very important to master. Reason being that it is a replacement for GD. Okay, GD used to be a very important round in MBA admissions, if you remember. And back in those days, based on GD, in these PDP classes, we used to teach GD. That has completely changed now. Okay, and therefore, you are being tested thoroughly on the written ability test. And if you ask me how is it scored, well, it's a mystery. Okay, we don't know how is it scored because they don't go ahead and really reveal the scoring mechanisms. All right, and it has a certain weightage. Okay, it has a certain weightage on your total percentile. Okay, let's say you are a 89th percentile on CAT, and that means that it will have a very good sort of a proportion from VAT be taken when deciding on your admissions. Now, one more question that arises is VAT same as the SOPs? Okay, so that question needs to be answered in detail. Okay, and in the meanwhile, I would please go ahead and ask everybody to turn on their cameras, right? Please turn it on. It's a PDP class, personality development, showcase your personality. That means, right? So please turn on your cameras. Very nice, Harsh and Sanjeev. Okay. So in the meantime, if I talk about the scoring mechanism of VAT, the scoring mechanism is not known. Okay, but it has got a huge weightage on your total score. So please go ahead and maintain that thing. Writing is important. And how is it different from SOPs? Okay, the SOPs that you write, statement of purposes, well, it's way different. SOPs, you are writing why you want to join a particular institution, what makes you fit, what makes you an awesome candidate, right? But if I talk about VAT, it purely tests your language skills, right? So more impressive you sound in VAT, the better you are as a candidate for an MBA college. Okay, so that's why when it comes to an SOP, I never ask my candidates to work on vocabulary, grammar, and whatnot. But when it comes to VAT, it is very important that you work on these aspects. Okay. Now, if I talk about, let's give it a read here. It's very informative. I have accumulated or compiled this text. Okay. So earlier, after getting a good score in MBA entrance exams like CAT, MAT, ZAT, SNAP, or CMAT, the two hurdles that needed to be cleared to gain admission to a decent B school were the GD and the personal interview. GD and PI, way back. I'm talking about like 5-10 years back. Okay. But later on, all IIMs first started this. I mean, one IIM started this, but later all IIMs followed this trend. They replaced the GD with VAT. Okay, it's not a Corona syndrome. Okay, it happened way earlier than that. And once they replaced it with VAT, basically it was anyone's guess what would happen as because an Indian candidate, for an Indian candidate, isn't it a great advantage, right? I mean, you go to any sort of person who is preparing for his MBAs. If you ask him what's your what's one weak point that harasses you all the time, okay, he or she will say spoken English or public speaking. Correct. So that part was removed totally, and now you can deliberate, plan, think, organize, and then write or give your point of view. So I feel personally that compared to a GD, VAT is a greatly advantageous thing. Okay, so if you can get it done rightly, it will hugely impact your outcome over there. Now let's go for the next slide over here. Just a moment. Yes. So what are the some appearances that that I can talk about in B school IIM Ahmedabad, which is the top one? Okay. So AWT VAT
was taken, spot test, and the time limit was was 20 to 25 minutes. The suggested word limit was 300 plus words. So it was written like this: more than 300 words you have to write. Now they did not give an upper limit, so you could have gone to 500, 600 words, but of course it's not advantageous to do so. 350 words would have been sufficient over there. If I talk about I am Bangalore, 30 minutes, 400 words approx. Okay, approximately is the term they used. So somewhere 390 would have worked fine, 410 would have worked fine, right? As you can see, the time was also a bit more. Now, what is the minimum time that can come? Well, you ask. The answer to that is a minimum time of 15 minutes can be given, and only 150 words you might have to write in your WAT. Now, if I go for the next one, how to go about writing, really how to go about framing and writing the WAT on an exam situation. Okay, so there are 3 key steps that you need to remember. The first one is planning. Okay, now many of us, we skip this, right? I mean, how many times do we really plan before doing anything in our lives? Mostly things happen spontaneously, but when we plan and deliberate on something, the outcome is usually better. Okay, so same, I mean, the WAT is no exception to this rule. Okay, so if you plan your essay properly, your outcome will sufficiently improve. And how that planning goes, I will tell you. Planning is not spontaneous. Planning is not random. Okay, it doesn't need to be like, आज सोचा कि ये लिख देते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वाह मजा आ गया, क्रिएटिव जीनियस बन गया मैं, वो करके फायदा नहीं है. So we will go ahead and plan in a proper way. The first point is listing down. Pick up the pen and a paper. Okay, वैसे तो कोरोना काल में वैट ऑनलाइन हो रहा था, तब भी तुमको एक रफ शीट तो मिलती ही थी, राइट? बट आई मीन होपफुली 23 में वैट विल बी डन, सॉरी 22 में वैट विल बी डन ऑफलाइन, ठीक है, विद अ पेन एंड अ पेपर. सो यू नीड टू लिस्ट डाउन द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक. ठीक है, लिस्टिंग डाउन द पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए, लेट मी शो यू सर्टेन टॉपिक्स इन द मीनवाइल here. For example, just a moment. Ethics and business, is it an ideal combination? Okay, let's say ये वाला topic आ गया. These are all topics that have actually appeared in some or other IIMs or other MBA exams. ठीक है, ethics and business, is it an ideal combination? अब क्या करेंगे यहाँ पे planning stage में? What will we do? Can you tell me what are the steps you will be taking? The steps are, let me discuss it first, then I will make you write one. List down the known points related to the topic. Okay, 1 2 3 करके, है ना? Business is what, पहला पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट होगा ethics is what. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एथिक्स, है ना? इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड. ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में मैं लिख दूंगा कि बिजनेस वेंचर्स में रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, whereas to maintain ethical standards, risk averse होना जरूरी है, right? We need to follow rules, properly given rules, delineated rules, right? And तीसरे पॉइंट पे मैं लिख सकता हूं कि how ethical based professions are really very different from way different from the business based professions. How? What are the professions that I'm talking about? Okay, import export versus judiciary. कितना डिफरेंस है दोनों में, जमीन आसमान का, है ना? जुडिशियरी में क्या डिपेंड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या डिपेंड करता है, राइट? तो ये कुछ मेरे हो गए. कुछ लाइव एग्जांपल्स इन केस स्टडीज लूं अगर मैं, उसमें दूसरा पॉइंट मेरा आ जाता है, वो भी लिस्ट करना है यहीं पे, इसी लिस्टिंग फेज में. ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल, whenever, time and again history has shown us that whenever a businessman has adopted unethical practices, the business has not gone far. Either it has been stopped by the legal authorities, or it has found some other roadblocks on the way. ठीक है, तो किस तरीके के differences हैं यहाँ पे between the legality or ethical aspect of it and the business aspect of it. ठीक है, तो कुछ examples जैसे कि रतन, ये जो बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, right? You can talk about them with the businesses involved. Okay, for example, Reliance Industries versus this, जो भी है, करंट अफेयर से रिलेट करोगे तो बहुत ज्यादा वो बनती है कनेक्टिविटी. ठीक है, करंट अफेयर्स से हटोगे तो कनेक्टिविटी खो जाएगी. अब अभी अगर तुम हड़प्पा मोहनजोदड़ो में चले गए,
ठीक है, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक के साथ, है ना, वो सिनेरियो है. थर्ड पॉइंट इज डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर बाय क्रोनोलॉजिकली अरेंजिंग द पॉइंट्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब स्किप कर जाते हैं. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, लेट्स से मैंने 5 पॉइंट्स लिखे. अच्छा गाइस, मैं थोड़ा माइक नीचे रख रहा हूं अपना. कैन एवरीबॉडी हियर मी? कैन समबडी कंफर्म? ओके, परफेक्ट. सो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूं, मान लो अपने कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स लूज कॉन्फिडेंस. ठीक है, लूज कॉन्फिडेंस व्हेन दे फाइंड दैट द कंपनी indulges in unethical practices. ये मेरा पॉइंट है मान लो. ठीक है, अब इस केस में ये मेरा मतलब दिस इज माय प्राइमरी पॉइंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि unethical practices are incentivized by corruption at the root level and judiciary. ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस इज टोटली डिफरेंट एंड ये टोटली डिफरेंट है, और दोनों के पॉइंट्स भी बिल्कुल अलग हैं. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम. तो क्या मैं इनको एक के बाद एक लिख सकता हूं? नहीं. आई विल हैव टू क्रोनोलॉजिकली पुट अ सीक्वेंस कि भाई मैं ये फर्स्ट में ये लिखूंगा, तो ऐसे. तो पॉइंट्स जब लिखोगे तो दो तरह का तुम यू कैन डू अ लेबलिंग, ए और बी कर दो यहाँ पे. ठीक है, एंड देन यू पुट 1 2 लाइक दैट. ओके, पहले मैं ये लिखूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट पैरा को पूरी तरीके से जुडिशियरी पे लिख रहा हूँ. ठीक है, दूसरे पैरा को मैं सेकंड पैरा में डाल दूंगा. ठीक है, सेकंड पैरा यहाँ पे लिख दूंगा. तो ये बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजिकली डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द राइट अप. ठीक है, डिसाइड ऑन योर ओपिनियन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका ओपिनियन है क्या. गाइस, जो एसेज हैं, जो टॉपिक्स हैं वैट के, ये टॉपिक्स बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे. अब ये भी तुमने देखा है ना. अब मैं तुमसे पूछूं तो तुम डायरेक्ट आंसर दे पाओगे इसका? इतना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है कि बिजनेस और एथिक्स, बिजनेस हैज टू बी अनएथिकल समटाइम्स, है ना. तो तुम्हें लगता है कि हाँ होना भी चाहिए, हाँ नहीं भी होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी रियली डिबेटेबल, एंड इन ऑर्डर टू really be persuasive in your essay, you have to have an opinion even before you start, है ना. So that's a very important aspect. So ये opinion तुम कैसे form करोगे? How will you form this opinion? By simply writing all the points you have, all the examples and all the case studies. अब देखो किस साइड में तुम्हारे पास ज्यादा पॉइंट्स है, that's it. ठीक है, मान लो ABCD करके H तक तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं इस साइड के. ठीक है, और 3-4 पॉइंट्स हैं तुम्हारे उस साइड के, तो तुम ये वाला साइड ले लो जिसपे तुमने A to H लिखा है. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू विल डिसाइड. यू विल नॉट डिसाइड ऑन द ओपिनियन ऑन द बेसिस कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस पे मत जाना. ठीक है, स्ट्रक्चर इट फर्स्ट, यू राइट द पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड कि कौन से के साथ जाना. ठीक है, ओके. नाउ इफ आई move on, this was the planning phase. This should last around 5 to 7 minutes, maximum 7 minutes. Time management का बहुत critical part है ये. If you are crossing 7 minutes, stop it then and there. ठीक है, मतलब उस प्लानिंग का कोई फिर फायदा नहीं है. ठीक है, दैट प्लानिंग विल नॉट हैव अ गुड आउटकम. ठीक है, सो वहां पे तुम स्टॉप कर दो. सिंपल. राइटिंग फेज पे आ जाते हैं. अब राइटिंग फेज लास्ट्स फॉर अराउंड 10 to 20 मिनट्स. ठीक है, बेस्ड ऑन द टोटल टाइम ऑफ कोर्स, इसलिए इतना बड़ा रेंज है. राइट, फोकस ऑन ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ गाइस. तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा ऐसे इंप्रेसिव साउंड कैसे करेगा. ठीक है, focus on grammatically. Yes, any some question is there, just a moment. Do the interviewers ask our opinions on our? Yes, you can, it's an opinion based topic. ठीक है, they will not ask it. अच्छा, interviewers बोल रहे हो? Yes, in the right, very nice point. So let's say after the WAT you sit for an interview. ठीक है,
So in that interview, if you have written an SOP and if there was a WAT, both will be taken into account. अब मान लो तुमने WAT पे लिखा है कि मोदी is not a good leader, ठीक है, तो लिखोगे नहीं, you will be critical about Modi, ठीक है, so Modi's policies have ensured that majority of the population is under this, as a reflecting the point you have. वहां पे तुमने मोदी की गुणगान शुरू कर रहे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां पे, है ना? यस, एनी मोर क्वेश्चन? ये वाला क्लियर है? Yes, right. So it means that we have to stick to the points that we have written in our WATs. बता रहा है कि ये मेल पे ये भेज दो तो एक वो पीआई का मॉक इंटरव्यू, मतलब हाँ मैं भेजूंगा। हाँ डेफिनेटली, तुम मुझे बोल रहे हो, राइट? यस श्योर, है ना? मेल पे मुझे मॉक इंटरव्यू भेजना, आई विल ब्रेक। अच्छा, इज इट क्लियर नाउ? Yes. Is that clear? Okay. Okay. तो अब हम आ जाते हैं राइटिंग फेज पे। राइटिंग फेज इज, एज यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसी वक्त सारे मेक और ब्रेक हो जाते हैं। प्लानिंग अगर थोड़ी सी कम इधर उधर रही कोई बात नहीं, चेकिंग भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है, पर राइटिंग में ही सारा कुछ कांड हो जाता है। देखो, फर्स्ट वाला, फोकस ऑन ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग। इजी सेंटेंसेस लिखना बंद करो गाइस। उससे क्या होता है ना कि इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तुम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो वो इंप्रेशन बनाएगा। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग होती क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है ना? तो मैं एक छोटा सा टिप देता हूं तुम्हें यहाँ पे वर्बल का, कि कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस ठीक है, सेंटेंसेस एंड यूज मॉडिफायर्स। सिंपल एग्जाम्पल देखो, I can write that Ram and Shyam are good friends. Ram and Shyam are good friends. I can also write that being friends, Ram has always been loyal to Shyam, comma, in a really amicable manner or whatever it is, ठीक है? तो मतलब कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक मॉडिफायर जोड़ा being friends, है ना? and then I try to complicate the sentence structure in a way so as to include certain good words in it, ठीक है? and then I stop. तो सिंपल सोचने की जगह तुम क्या करोगे? कंबाइनिंग करोगे सिंपल थॉट्स को इनटू मोर कॉम्प्लेक्स थॉट्स, ठीक है? एंड यू विल यूज मोर एंड मोर मॉडिफायर्स इन इट, ठीक है? गुड वोकैब इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट यू कांट डू अवे विद, ठीक है? वोकैबुलरी, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही इंप्रेसिव साउंड करने के चक्कर में कम पूरा प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे, ठीक है? तो अब तुम वहां पे ये नहीं बोलोगे जाके कि the exceptionally didactic pedagogy has always traversed in the metaphysical and never given us the hint of the plaintive. ऐसे करके बोलोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा वहां पे, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन एक लिमिट तक ना इंप्रेसिव साउंड करता है, पर उसके बाद इट साउंड्स रियली रियली क्रैपी, ठीक है? सो वहां पे कोशिश करो कि सिंपल सेंटेंसेस ही फॉर्म करें एंड वी कंबाइन देम together and use modifiers along with to develop a complex and impressive structure, ठीक है? ये important है। Okay, now next point is give a good proportion of adverbs, adjectives and modifiers. Guys, जब तुम इसके बाद आता है checking phase, ठीक है? checking your write up. तो उस checking phase में तुम पूरा पढ़ोगे ही of course, and जब तुम पढ़ोगे तो उसमें कितना proportion of adverbs, adjectives and modifiers है गिन जरूर लेना, ठीक है? तो अगर मैं छोटा सा एक राइटअप फिर से लिखूं यहाँ पे कि the Iron Man of India, whatever, Iron Man of India as he was called, मतलब मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करूँ, अगर तुमने एक लंबा सा पैरा लिखा है
ठीक है, उस पे तुम यू कैन लिटरली काउंट द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स एंड द एडवर्ब्स, ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड simile for this man, ठीक है. So one that will count as one simile, right? So and it will make it sound more interesting, and it will help you to do what? It will help you to avoid repetitions. Okay? Avoiding repetition is very important. Anyways, coming to the checking part later on. Include popular references and quotes. ये relatability बढ़ाते हैं, ठीक है. Find your own path, ठीक है, एली वॉशिंगटन, whatever it is, है ना. ऐसा करके कोट डाल दोगे तो शुरू में एक इंप्रेसिवनेस बनेगा, इंस्पिरेशन जगेगा, ठीक है. तो जो पढ़ रहा है ना, रीडर्स के माइंडसेट में घुसो लिखते टाइम. रीडर का माइंडसेट क्या है? वो चाहता है कि कुछ नया मिले उसे, ठीक है, उसे कुछ नया मिले और इनोवेटिव मिले, और वो रीडर जो है वो स्माइल कर जाए, कीपिंग द कन्वेंशंस अलाइव. ऐसा नहीं है कि तुम कन्वेंशन को ही तोड़ दोगे, ठीक है. कन्वेंशन को तोड़ना गलत हो जाएगा मामला, गलती मत करना. उसके अलावा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा इनोवेटिवनेस दिखना चाहिए उसमें. सो इंक्लूड पॉपुलर रेफरेंसेस एंड कोट्स इन ऑर्डर टू गेट देयर. चेकिंग फेज पे आते हैं, विच विल नॉट लास्ट मोर देन 5 minutes, और बहुत एफिशिएंट चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है. शुरू से पढ़ना शुरू करो स्पीड रीडिंग में मोड में. स्पेल चेक विल नॉट बी देयर, सो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना. बिलीव रिसीव छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं, है ना. एक में आई पहले आता है, एक में आई बाद में आता है, वो चीज, वो सिनेरियो. चेक फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो राइटिंग का जो वैट का जो तुमने पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा क्या वैट से रिलेटेड कुछ जो हमने लिखा है. यस, वो तो पूछा जाएगा ही, पर वैट में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, उसका क्या करेंगे, है ना. मतलब वैट के ऊपर के हिस्से में मैंने कुछ अपना ओपिनियन दिया है, और लास्ट के हिस्से में मैं जाके उसका बिल्कुल 180 डिग्री टर्न अराउंड ले रहा हूं, है ना. इनडायरेक्टली भी वो नहीं कर सकते. डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, ठीक है. 5-10 वर्ड से भी ऊपर मत लेके जाओ. ये तुम्हारे उसको दिखाएगा कि तुम कितना अवेयर हो, ठीक है. रिडैक्ट इफ नेसेसरी, मतलब कि हटा दो अगर चीजें चेकिंग करते वक्त, अगर तुम्हारा वर्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है तो, ठीक है. अवॉइड रेपिटेशंस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियाज. फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन किस तरीके से काम करता है गाइस. इट वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है. और ऑब्सेशन बहुत जल्दी आता है हम लोगों को, ठीक है. एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल प्रोन टू दैट प्रॉब्लम, ठीक है. कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के अराउंड ही सब कुछ आ रहा है मेरे पास, अब कुछ नया पॉइंट आ ही नहीं रहा है. इसीलिए वो प्लानिंग फेज बहुत जरूरी है, बाय द वे, ठीक है. तो यहाँ से प्रॉब्लम का बर्थ होता है, द बर्थ ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है. और कोई जब बिल्कुल फ्रेश रीडर उस ऐसे को पढ़ेगा तो कैसी फीलिंग आएगी उसे, ये तो कुछ नया है ही नहीं इसमें, है ना. ये शुरू में जो लिखा था वही रिपीट होता हो रहा है. तो रीडर के माइंडसेट से अगर तुम देखो तो रिपीटेशन इज अ प्रॉब्लम, है ना. तो पहला तो आइडियाज को ही रिपीट मत करो. मैं तो ये कहूंगा वो नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी है, ठीक है, कि आइडियाज ही रिपीट नहीं हो रहे हैं. सारे आइडियाज इतने जेन्युइन और सही हैं, और येट ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा रैंडम है, सब प्रॉपरली लिंक्ड है. ये एक फाइनेस्ट लेवल ऑफ राइटिंग होगी, ठीक है. बट तुम अगर चाहो तो तुम शॉर्टकट्स अपनाओ, ठीक है. जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, वी कैन गो अहेड एंड अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स. सिंपल, एक वर्ड है मेरे पास, उसका सिनोनिम डाल दो, या उस वर्ड को एक फ्रेज में चेंज कर दो, या उस फ्रेज को एक आइडिया में चेंज कर दो, दूसरे ही अलग, ठीक है. तो ये चीज होनी चाहिए. कहीं भी कोई भी रिपीटेशन एक्सेप्ट प्रोनाउंस एंड प्रॉपर कन्वेंशनल वर्ड्स जो है वो रिपीटेशन कहलाएगा, ठीक है. द वर्ड दैट इज, फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार बोला है, पॉपुलर रेफरेंसेस have said, have put forth the assertion numerous times that X, ठीक है. उसके बाद मैं न्यूमरस आगे भी पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं many बोल दो, ठीक है. a lot of बोल दो, ठीक है, and so on, and so many बोल दो, ठीक है. बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे. So these are some useful links, guys. I will go ahead and send you a copy of these links, okay, in the last leg of the class. But before that, let's do a WAT test. Okay, I hope it's clear. Any doubts or questions related to WAT? Okay, WAT से अलग मत करना अभी के लिए topic. Okay, great. So that means I was very thorough, or that means I was very confusing? Huh? No questions? No, sir, you were thorough, sir. Thorough, okay. All right. So let's go for a topic. Just a moment. Here. Is the Smart Cities Initiative in India a failure? ठीक है. तो मैं क्या चाहूंगा, सबसे पहले मैं तुमको एक ऐसे नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ.
मैं ध्यान से समझना क्या चाहता हूँ. I want you guys to read the topic first and just make up the planning chart. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ planning chart कैसा बना तुम्हारा. ठीक है. So I'm going to give you a topic from this list and then you will go for a planning chart. Okay. What can be done to reduce income inequality? बहुत easy है, right? What can be done to reduce inequality? अब पूरा ही तुम्हारा ओपिनियन है, ठीक है, इस राइट अप पे, तो किसी भी एंगल में लेके जा सकते हो. इट्स अ हाईली क्रिएटिव टॉपिक. ठीक है. सो प्लीज मेक अ चार्ट एंड आई गिव यू 5 minutes फॉर इट. स्टार्ट. Please send it to me on the chat box once you are done. Sir, Yep, tell me. sir, can you share that PPT on the group? Yes, I will. Don't worry. I need to just discuss a few more points and include that. I just, made that PPT in the last half an hour. So I have to include some more points in it and then I will share. Okay. Sure, sir, sure. Yeah. Remember, the better the structuring, the better the outcome. Okay. So I need the points listed in a very sequential manner. Is there anyone to whom the topic is unclear? They can ask me. Okay. The topic is this: what can be done to reduce income inequality? Very nice. A is women empowerment, but send it to me, Rohit. Send it to me in a sequential manner, buddy. Okay. So I Sir, need actually, I was changing the paragraph. I pressed enter and it sent. It got sent. Okay. Yeah. Okay. No problem. No problem. Yeah. Okay, so Dipanshu has got his gem out. Let's see. Income inequality, percentage share, steps taken in the past, challenges to it, role of government organization, role of individual. देखो ये यहाँ पे specificity खत्म हो जाती है. Dipanshu, note making में ये important चीज है कि you don't write, just vague things. You write some specific things as well. समझ रहे हो? So income inequality अच्छी है, परसेंटेज शेयर भी ठीक है,
परसेंटेज शेयर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी दीपांशु वंस? So like in previous decades, what was the ratio, and in Okay, currently what it is there? right. Steps taken in the past versus steps taken in the present, ये बोल सकते हो. अच्छा ठीक है. So उससे लर्न कर सकते हैं हम, तुम ये बोलना चाह रहे हो. चैलेंजेस टू इट का को डिस्कस करोगे तुम. रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ इंडिविजुअल. देखो ये तो, अब ये जो पॉइंट्स हैं इसके अलावा एक केस स्टडी कहाँ है? ये पॉइंट्स ठीक है, होली इंक्लूसिव है, अंडरस्टूड, प्रॉपर है, पर केस स्टडी या एग्जांपल कहाँ है? वो भी तुम्हें नोट मेकिंग में लिखना है. डू गेट माय पॉइंट दीपांशु? राइट. सो या हर्ष साहू देखते हैं, इनकम बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ पीपल इन द करंट सिनेरियो. इनकम बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ पीपल इन द करंट सिनेरियो. इसको थोड़ा सा वेग हो गया है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना कि करके क्या फिर. ठीक है, करके क्या? सिर्फ इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में जाएगा वो, या मतलब क्या होगा? ठीक है. रीजंस बिहाइंड द सेड सेग्रीगेशन लाइक स्किल सेट. ठीक है, अच्छा अब समझ आ रहा है. ओके, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गॉट इट. difference between the payouts between the generations or what is it? Anyways, okay, so Rohit का हम वेट करते हैं. All right, let's wait for some more. Guys, Actually, it is incomplete. So it was sent by mistake. I was completing it. no problem. ठीक है, no problem. तो मैं भी एक सैंपल करूंगा, but I will show it to you later on. ठीक है. It's not like a competition or anything, but I have written a lot of essays in my life, so I will just share some tips. Just more. Share of top 10% in total income, it's 51.7%. Define gender or within classes, society cannot be done. Need employees at every level to carry out tasks. Yes, very good, Anirudh. Very specific. Define context between gender or within classes of society. बहुत ही बढ़िया. मतलब ये वेग है, पर ये मतलब ये इंट्रोडक्टरी पैरा का वेग हो सकता है, राइट? ये अच्छी लाइन है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड वन, क्लासेस ऑफ सोसाइटी कैनॉट बी डन, नीड एम्प्लॉयज एट एवरी लेवल टू कैरी आउट टास्क्स ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है, एवरी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात कर सकते हैं बहुत देर तक हम. जेंडर कैन बी डन, डिफाइन वेजेस फॉर एवरी रोल थ्रू आउट द कंपनी. ठीक है, थ्रू आउट स्पेसिफिक कंपनीज, कंपनी लॉ पे भी बात कर सकते हो. अच्छा, ये स्कोप ध्यान रखना. ठीक है, रिमेंबर द स्कोप. यू स्टार्ट आउट विथ द कंट्री एंड देन यू गो टू द कंपनी एंड देन यू कांट गो टू द इंटरनेशनल कंपनीज और एमएनसीज, है ना? सो द फर्स्ट पॉइंट हैज टू बी गिवन फ्रॉम एमएनसीज, maybe इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ पॉवर्टी. देन यू कम टू, सो ये स्ट्रक्चरिंग दिख जाती है पूरे पैरा बाय पैरा. इफ इट इज क्रोनोलॉजी, देन पहले ये, फिर ये, past, present, future. Either it is past, present, future, ठीक है, or it is structuring down from more wider to more specific. ठीक है, more local, है ना? So income based segregation of people. अच्छा, ये हर्ष का है, हर्ष का लास्ट वाला है. Proper case study pertaining the role of organization, different organizations helping to reduce this. NGOs की बात करोगे मतलब यहाँ पे most correct. Okay, so Rohit, women empowerment, stronger labor laws. हाँ, very specific, very nice Rohit. Women empowerment, stronger labor laws, rural reforms, more funds allocated to basic needs. ठीक है, COVID time increase the income gap between the classes. Case study. Okay, very good. The rich are giving less proportion of tax. Elon Musk controversy. ये वाला अच्छा है, गुड है, काफी इनोवेटिव है, पर फिर उसी टोन और लहजे में लिखना पड़ेगा. ठीक है, टोन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग इन सम पॉइंट विच इज फार ऑफ, है ना, लोकलाइज्ड नहीं है इतना, तो उसी टोन में और टेनर में तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. ओके, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट माय वन, लेट मी जस्ट try to write and tell you what is the need of this women empowerment के steps, है ना. So let's say I will be writing around 300 words. ठीक है, let's say my plan is for 350 words, let's say. Okay. And वो मैंने word limit देख के सब काउंट करके मैंने तय किया है कि मेरे को इतना लिखना है, और मुझे पता है कि इंट्रो एक लिखना है. ठीक है, उस इंट्रो में मुझे एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना है.
उसमें मेरा ओपिनियन समराइज करना है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। Yes, one more pointer has come. Let me read that, Sanjeev. India skipped the process of industrialization and resulted in an income divide. हाँ, skipped the process of industrialization or rather missed. Skip तो नहीं करेंगे, miss करेंगे, right? Manufacturing sector only 14% of GDP, target set at 25%. So we are way away from target. Point तो वो होगा ना? We are way away Yes, from sir. that, right? So these are not structured. I mean, these are just a few pointers that I wanted to work on. Right, right. So यहाँ पे इसके बाद तुम इसको curate करोगे, ठीक है? You will not leave it like this. You will curate it. So I need the curated version, but okay. 80% of wealth, then 20% of pop. Pop का मतलब क्या है? POP? I don't know यार. Profit or what? मतलब it is a financial term, I think. Sir, I was typing, it got sent. Okay, okay. All right, all right. So intro is background info, you know, my opinion, which will be summarized. ठीक है, some major points, that's it. ठीक है, now I will start. One, मेरा point होगा कि the rapid industrialization and seclusion of the poor from the growth story. बहुत ही परसुएसिव रहेगा पॉइंट इस पे, है ना? मतलब कि राइट कि जैसे कि मतलब सबको पता है कि इंडस्ट्रियल एज कॉर्पोरेट्स और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, यू नो, कैपिटलिस्ट कल्चर में सब लोग यू नो और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, पर गरीब गरीब होता जा रहा है. दैट इज ट्रू. तो सब मानेंगे इसको. देयर विल बी नो क्वेश्चन. ऐसे पॉइंट्स लिखो जिनको कोई क्वेश्चन ही ना आ सके, मतलब रीडर पढ़े कन्विंस्ड, यस यू आर राइट. ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा कि यू नो मेरा बैकग्राउंड इन्फो इस पे होगा. ठीक है, और बैकग्राउंड में इसी पे लिखूंगा, सेक्लूजन ऑफ द फ्रॉम द ग्रोथ स्टोरी. सेकंड पॉइंट हो जाएगा मेरा ऑन अ नॉट ऑन एन इकोनॉमिक लेवल, ऑन अ सोशियो पॉलिटिकल लेवल. तो ये पैराग्राफ डिविजन्स हो रहे हैं, ये पैरा डिवीजन में अभी से सोच रहा हूँ. ठीक है, तो एक पैरा मेरा बना इंडस्ट्रियल एज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन उस पे, और एक और उसी पैरा में मैंने सेक्लूजन ऑफ द पुअर फ्रॉम द ग्रोथ स्टोरी बोला. तो इन सब चीजों को ठीक करेंगे, इंप्लाइड मीनिंग, तो ये भी ठीक हो जाएगा. सेकंड पैरा मैंने बोला सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे. सोशियो पॉलिटिकल पे मेरा क्या बना कि द पुअर हैज राइट्स ओनली इन अ डेमोक्रेसी, दैट टू. सो पुअर्स राइट्स, ठीक है, पुअर्स राइट्स पे बात करूंगा. ठीक है, हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शेप्स द amenities, how international politics affects him. And every para, if it is centered around the main idea, then it is coherent. Remember, every paragraph, हर पैराग्राफ अगर बिल्कुल सेंटर पे जा रहा है ना उस थीम के, तो वो अच्छा ऐसे होगा. अगर कोई भी पैरा ज्यादा डिविएट कर रहा है और उसकी जरूरत नहीं समझ में आ रही है तुम्हें, तो उसको हटा देना चाहिए. रिमेंबर दिस. ठीक है, तो ये पुअर्स राइट्स, हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अफेक्ट्स हिम, ये किस तरीके से लिखा जाएगा, काफी ट्रिकी है. ठीक है, कि यू नो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तुम्हें जो देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर डिक्टेटरशिप्स और व्हिच आर मोनार्कीज, राइट. इन देम देयर इज अ सिंगल मैन रूल, राइट, एंड नेमसेक डेमोक्रेसीज भी हैं कुछ. ठीक है, उन कंट्रीज में तो खासकर कुछ नहीं मिलता लोगों को, राइट, जो गरीब होते हैं, राइट. सो क्लास डिवीजन, यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस. तो ये चीज तुम लिख सकते हो, सोशियो पॉलिटिकल एंगल. तो एक पैरा उस पे, एक पैरा इस पे, काफी अच्छा वेरिएशन मिल जाएगा. थर्ड में इफ आई गो फॉर द थर्ड पार्ट, आई कैन गो फॉर यू नो मे बी सोशियो पॉलिटिकल हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इनोवेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और क्या, और थर्ड पैरा, बस थर्ड पैरा चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन. तो थर्ड पैरा में मैं लिख सकता हूं इकोनॉमिक marginalization of the poor. Don't get confused, this is not the same as the previous one. The previous one was talking about rapid industrialization, innovation and stuff like that, and this is the economic marginalization.
how their voices remain unheard due to the curbs imposed under the influence of the rich class. Yes, but ये बहुत इमोशनल अपील हो गया. मैं तुम्हें अभी बताऊंगा. तुमने हर जिस तरीके से फ्रेम किया ना इस सेंटेंस को, इट इज अ वेरी बिग इमोशनल अपील. ठीक है, तो इमोशनल अपील्स बहुत लिमिटेड कर रखना, ये चीज मैं समझाऊंगा तुम्हें. ठीक है, तो एक लाइन तक ठीक है ऐसा कि व्हाट हैपेंस टू द पुअर when the seats of power are grabbed by the rich and the who's who of the society, who will think about them. ये rhetorical questions सब ठीक है एक लाइन, बट पूरा बाकी तुम्हें लोगोस पे फोकस करना है. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऐसे के. ठीक है, एथोस, पैथोस एंड लोगोस. एक प्रॉपर परसुएसिव एसे जो होता है ना, वो इन तीनों को एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन और रेशियो होता है. एथोस मतलब जो रीडर पढ़ के उसे लगे कि ये सही कह रहा है, सही और गलत में सोचे, मतलब ठीक है, सही और गलत में, कि जो ये मतलब ये जो बंदा है ना, ये इतनी सही बात है, मैं आज तक ये क्यों नहीं सोचा एथिकली. ठीक है, उसका गिल्ट जाग जाए अंदर से. ठीक है, पैथोस वो जो उसके इमोशंस को जगा दे. ठीक है, वो सैड हो जाए पढ़ के, he actually has that vivid imagery. ये तुमने पैथोस करा है. मुझे सच में unheard, due to unheard, one heard ऐसे वर्ड्स यूज करके पैथोस. And if I talk about logos, that's the logical ability. तो लॉजिकली तो कन्विंस करना सबसे आसान होता है किसी भी क्लास को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एथोस और पैथोस कोई वैल्यू नहीं है. तो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन होना चाहिए. लोगोस 50%, पैथोस 25%, एथोस 25%. ये हेल्दी कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, राइट. एथोस पैथोस लोगोस का कॉन्सेप्ट, राइट, वो चेक करना कि हमेशा ऐसे लिखने के बाद ये चेक करना कि इसमें इमोशनल कंटेंट कितना है, इसमें लॉजिकल कंटेंट कितना है, और इसमें एथिकल राइट रॉन्ग वाली चीज को अपील करने के लिए कितना कंटेंट है. वो चेकिंग पार्ट में ही आ जाएगा. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर थिंग, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. ठीक है, नाउ दिस वाज अ वेरी एक्सपोजिटरी टॉपिक, है ना, काफी पॉइंट्स आ रहे थे. नाउ लेट्स टेक अ मोर incisive point driven topic, and I want you to write the complete essay. Okay, but I need to make you write 2 at least today, so I will go ahead and give a lesser word count, 150 word count. ठीक है, रखते हैं 150. ideally should take you 20 minutes. All right, so let's go for something which will be difficult. So is linking Aadhar, हाँ, this is a good one. expository नहीं है. ठीक है, सोचने में काफी टाइम लगेगा. इज लिंकिंग आधार विद बैंक अकाउंट्स अ गुड आइडिया? ठीक है, इज लिंकिंग आधार विद बैंक अकाउंट्स अ गुड आइडिया? आई गिव यू 10 minutes, 20 minutes. You need to start writing it. Okay, manage time properly. Go ahead, start. I will send the topic on the chat box as well. Just a moment, guys.
And guys, I will be meeting you after 10 minutes. Okay. So if there are any questions, please reserve them, but give it your best shot. I will analyze it and score it as well. Okay, Anirudh. It's okay. No worries. We'll see you later. Keep in touch with through Telegram. Okay, I'll send it. Send them again.
10 minutes more, guys. So word limit is? Word count is minimum 150 words. Okay? Minimum 150 words. Okay, sir. अच्छा संजीत, ओके चलो ठीक है. मतलब वैट की क्लास लास्ट प्रायोरिटी है सबके लिए, हैं? थोड़ा सा प्रायोरिटी दो गाइस एडब्ल्यूए को.
Okay, I have my first response here from Harsh. All right. Let me take it on a notepad. So this is the third paragraph, Harsh, right? UID Aadhar, right? Can you hear me, Harsh? Yes, sir. So this is the third paragraph, right? The UID Aadhar project. Yes, sir. Okay. So actually, there's a word limit in the chat also. I can't type after this. Okay. You. Yeah. Correct. You can send it to me in two parts. Go ahead. Everybody send it to me in two parts. Okay. I think that will work. Okay, Harsh, have you revised? I think you have. I mean, you have written the whole of it, or you have written just the part of it, Harsh? So I've written just a part of it. Okay, okay, okay. Finish it. Finish it. Okay. Okay, just one response so far, and the time is 2 minutes remaining, guys. Okay, this is alarming. I have no other responses apart from Harsh's. Someone must have been done by now. 1 minute. Sir.
Okay, great. Harsh has given his last sentence. Okay. I think the time is up. No. Yes, time is up. Yeah, I have added it, appended. Okay. Now, what about the others? What happened? Send it to me, everybody. Sir, I So- was writing in the copy. Okay, you are writing in the copy. Okay, you will read it to me. Okay. Yes, sir. So, yeah, Astha, what about you? Astha the faith? Yeah, due to the efforts of government. So, Rohit, my question to you is this all? Okay, no. Okay. Done, sir. I can hear myself. Just a moment. That's because of Somebody is YouTube. seeing the live also, I guess. Yeah. Got it. Can I close it? Can this live be closed down? Huh? All you techie guys, can you help me out here? In Zoom, Okay. there must be an option. Like, Okay, I'm closing it. I don't think it will be impacted. Okay. So, yes, now I can properly be with you. There are no double voices. Go ahead and tell me one by one. Yeah. What were the issues? So the Anyone? basic issue that I faced was concluding the essay. Okay. Like I was confused that the topic was straightforward. I have to give my opinion. No, so do I have to straight away start that? Yes, I do think that Aadhar that linking this and this is very good option. Or should I conclude my essay by saying yes, by giving my opinion? See, your opinion shall not be direct. You have to give your opinion. ठीक है? Thus, I believe नहीं. पूरा ऐसे थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा. ध्यान रखना. ठीक है? थर्ड पर्सन में ही लिखना है. आई का आई वाला वो पोर्शन ना पूरा वो कर देता है, डाइल्यूट कर देता है चीजों को. आई बिलीव, आई थिंक. अंडरस्टूड? Okay, sir. या पूरा ऐसे थर्ड पर्सन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा. पर कंक्लूजन में आके तुम ये कर सकते हो कि thus it can by examining all the above arguments and the appropriate evidences supplied, one can say, or one can beyond reasonable doubt infer that. तो इतना indirect language में थोड़े लिखेंगे ना तो थोड़ा impressive sound करता है basically. ठीक है? I believe, I think, उससे वो थर्ड पर्सन पे जाओ. ठीक है? One say, one thinks, या researchers say, या scientists have asserted time and again. समझ रहे हो? थर्ड पर्सन पे. अभी अगर मैं अपनी बात तुम्हें बोलूं तो तुम मानोगे क्या? मतलब ऐसे ही अगर मैं ओपिनियन दूं बिना किसी एविडेंस के? नहीं ना. राइट? So it yes, is so like that, like I had a line in my mind to write that. I had that I can write the conclusion line like, let's hope that the government will be able to achieve its objective via the Aadhar card, and I had something like this in the mind. let's hope. नहीं. अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया. Let's hope बोला ना तुमने अभी भी? हाँ, yes. Let's hope ऐसे हम contractions नहीं करते हैं. ध्यान रखना. ठीक है? These are called contractions. Alright. So do not contract the verb and this like this. Let us think तो फिर भी better है. वैसे वो भी informal हो जाता है. ठीक है? Let us think. ठीक है ना? समझ गया ना? Isn't को is not लिखना है. ठीक है? Don't use contractions. Okay. Right. Okay, now if I talk about नहीं ऐसे मत लिखो. Let us think. ये मतलब this is a simple tea time conversation लग रहा है. Let us go for a dance. Let us go for some party. ऐसे नहीं Yes, लिखेंगे. getting a point. Yes. So the identity of a situation in the wake of infiltration by neighboring nations can be termed as the missing link. हर्ष ने लिखा है guys, देखना ही. काफी अच्छा लिखा है वैसे तो. ठीक है? 10 on मतलब 9 on 10 sort of. सिर्फ कुछ improvement के points अगर मैं बता सकता हूँ तो मैं वो बताऊंगा. The identity of a citizen in the wake of infiltration by neighboring nations can be termed as the missing link in India's efforts to rise on a global scale.
काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ठीक है, अनइम्प्रेसिव है, लेकिन आइडिया पूरा दे रहा है। बेसिकली पाकिस्तानी का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है टेररिज्म का वगैरह वगैरह का, उसकी बात हो रही है शायद मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो जैसे जब आगे से बांग्लादेश के सिटीजन आ जाते हैं और भी नेबरिंग कंट्रीज के सिटीजन आ जाते हैं ना वो लेने के लिए। Right. The Aadhar scheme launched by the government is an identity driven technology. Okay, is an identity driven technology to lead the citizens in a right direction. नहीं, लेकिन ये समझो यहाँ पे कोहेरेंस टूट गई है। इस लाइन के साथ क्या लेना देना है, कुछ जुड़ाव तो होना चाहिए ना, है ना। सो बेसिकली इसको इंप्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ध्यान देना। फर्स्टली first and foremost, the identity of a citizen in the wake of infiltration by neighboring nations can be termed as the missing link. ठीक है। Furthermore, यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए था जो मिस हो गया है। Furthermore, the banking sector is largely disorganized because of the duplications or the duplicitousness of the initiatives like PAN cards and other documentations. समझ रहे हो? ठीक है। Yes, sir. राइट। अब उसके बाद तुम ये डाल दो कि द आधार स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज एन आइडेंटिटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी टू लीड द सिटीजंस इन द राइट डायरेक्शन। अब ये मेक सेंस कर जाएगा पूरा, इज एन आइडेंटिटी ड्रिवन। ओके सर। यस। अब इन अ राइट डायरेक्शन, हाँ ठीक है, चलो इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। द आधार कार्ड ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टेनिंग ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। ये लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट लिख चुके हो, रिविजन। सो व्हाइल चेकिंग यू विल रिडैक्ट दिस, है ना, राइट। यस। And in recent times, linking Aadhar with bank accounts was made mandatory, which had many contradiction and confusion. अच्छा, many के साथ हमेशा plural लगता है, many contradictions and confusions, पर वो भी अच्छा नहीं है। ये तो grammatical error की बात हो गई कि many contradictions and confusions, पर उसको भी improve किया जा सकता है। कैसे? कि which had many what opponents या opposing voices, है ना, राइट। लिंकिंग, देखो तुम आधार की तो बात नहीं कर रहे हो ना, तुम लिंकिंग आधार की बात कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड मी? यस सर। है ना। तो व्हाट हैड मेनी, अगर यहाँ पे तुम विच लगाओगे तो वो किस चीज को रेफर करेगा, आधार को या लिंकिंग आधार को? लिंकिंग। तो लिंकिंग आधार हैड मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, ऐसे सोचो, लॉजिकल नहीं लग रहा है ना? नो सर, कंफ्यूज वॉइसेस है जैसे क्या सर। हाँ, सो विच हैड नहीं, बेसिक नहीं है, इट्स अ वेरी गुड राइट अप। तुम पहले तो अपने ये कॉम्प्लेक्स में जाना बंद करो, बहुत ही बढ़िया राइटिंग लिखी है तुम, ठीक है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है ये बेसिकली, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड राइटिंग। अब मैं तुम्हें रिव्यू दे रहा हूँ ताकि कुछ बेटर कर सको, ठीक है, ऐसे समझो इसको। सो विच हैज मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस की जगह हम लिखेंगे विच हैड मेनी यू नो कॉन्ट्रडिक्टिंग और opposing voices, ऐसे लिख दो, which had many contradicting and opposing voices। और contradiction और confusion एक ही साथ में नहीं हो सकता, थोड़ा वेग हो गया ना, एक तरफ confusion भी बोल रहे, एक तरफ contradiction भी बोल रहे, सोचो, है ना। तो which had many opposing voices among the general people, और people की बात की है तो basically voices is better, है कि नहीं, इसीलिए। बट इन एसेंस, अब बट से पहले यहाँ पे कॉमा, पंक्चुएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। खैर वो एक अलग लेवल पे चले जाएंगे, आज हम पंक्चुएशन पे नहीं जाते हैं। बट इन एसेंस इट इज, अब इट इज से पहले भी एक कॉमा। इट इज इंडीड अ ग्रेट स्टेप as it has many advantages that the lower common pool or rural sector is unaware of. ठीक है, very good. Very nice, complicated sentence. I totally congratulate you on this one. Good. The UID Aadhar project has two different dimensions. The first one is that it is linked to the national security, and the other one is developmental. Other one is the developmental concern. ये छोटी-छोटी चीजें checking phase पे हटा दिया करो, ठीक है? Okay, sir. Yeah, both the factors are equally important. An Aadhar-enabled bank account can be used by the beneficiary to receive multiple welfare payments. By linking the Aadhar directly with the bank accounts, money can be directly deposited to the right individual without the nuances of a middleman siphoning off portions of money from the needy. Great. Aadhar shall be able to reduce the involvement of middlemen who siphon off part of the subsidy. ये देखो, ये repetitions, ठीक है? Who
Yeah, correct. So repetitions on the level of words, on the level of adjectives, adverbs, on the level of phrases, on the level of ideas, they have to be avoided. Okay. Now let's go for the next one. इतना अच्छा ऐसे लिखा है इन्होंने कि कंपटीशन में आ जाएंगे अब सब लोग, मुझे लगता है. देखते हैं. Let's go for it. What can be added more to this, sir? Like it is about only of 150 to 170 words. हाँ, तो मैंने टाइम भी तो बहुत कम दिया ना तुम्हें. 20 minutes is not the time that you get. You actually get around, I mean, for 25 minutes for 200 words. ठीक है. Like, sir, but what I can add more in this, like after I have like given 2 examples to strengthen my point. कंक्लूजन What नहीं I could- दिया है तुमने. You could हाँ, have yes. included a conclusion. ठीक है. एंड उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा. आई एम श्योर यही हुआ है. पर वो सिनेरियो है कि तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीजों को हम. ठीक है. और उसके लिए बहुत सारे एसेस लिखना जरूरी है, सो दैट इट बिकम्स प्रैक्टिस. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि तुम क्या कर सकते हो. और लेट्स काउंट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्टली पहला, ठीक है, मतलब सॉरी ये तो मैंने लिया है, द आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन इन द वेक ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है. व्हाट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर स्कोर. रियली ये एक अच्छी लाइन है जो तुमने लिखी है. ठीक है. नेबरिंग नेशंस, ये अच्छी है. ऑन अ ग्लोबल स्केल. फर्दरमोर द आधार स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट. और कोई एडजेक्टिव नहीं है, दे सकते थे. ठीक है. आइडेंटिटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी विच इज इनोवेटिव, नॉट ओनली इनोवेटिव yet totally digitized, which makes it convenient to use. ऐसे करके कंबाइन करके तुम लिख सकते थे. मॉडिफायर्स को कंबाइन करना भी सीखो गाइस. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे तुमने मॉडिफायर दिया है, द आधार स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. एब्रीविएशंस मत डालना कभी. देयर शुड बी नो एब्रीविएशंस. रिमेंबर दिस. ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट में अगले वैट सेशन में ले लूंगा. ठीक है. जो भी डूज एंड डोंट्स होंगे, आई विल टॉक अबाउट it in the next class. आज मेरे पास टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाया. The Aadhar scheme launched by the governments is an identity driven technology to lead the citizens in a right direction. ये एक simple sentence है. This is a simple sentence. You could have complicated it a bit more like this. The Aadhar scheme launched by the governments is an identity driven technology, comma, which is not only innovative but also extremely convenient, as it does not, as it involves digitization in its entirety. है ना. ऐसे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे इसमें. तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया. द आधार कार्ड ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टेनिंग ऑलमोस्ट द पर्टेनिंग इज अ गुड वर्ड. ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल. वेरी नाइस. प्रॉपर यूजेज ऑफ कॉमा. पर ये सिनेरियो ध्यान रखना कि नॉर्मली कन्वेंशन कहता है गाइस, कन्वेंशन कहता है कि वर्ब से पहले हम कॉमास नहीं डालते. ठीक है. इज से पहले, मतलब गलत नहीं है ये, पर इट इज अनकन्वेंशनल यूजेज. समझ रहे हो. तो द आधार कार्ड ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टेनिंग ऑलमोस्ट, यहां पे ऐसे कर दो इंडिविजुअल, यहां पे 2 कॉमास डाल दो. पर्टेनिंग ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल. ये प्रॉपर यूजेज ऑफ कॉमा है. एनीवेज, कॉमा का मैं बताऊंगा बाद में थोड़ा सा. कॉमा के रूल्स किस किस को पता है गाइस? रेज योर हैंड्स ओवर हियर. पंक्चुएशन के रूल्स होते हैं कुछ. देयर आर सर्टेन रूल्स. Okay, Harsh knows this, right? Harsh, the rule is basically one independent clause, one dependent clause, right? तो वो रूल हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? देखो ध्यान से. अगर मैंने एक कॉमा लगाया है, Sir, actually, I was writing my all points. I was overlooking the commas and small errors. वो ये देखो, 20 मिनट में तुमने इतना कुछ इग्नोर कर दिया. वहां पे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट मिलेगा. तो डोंट टेल योरसेल्फ कि जो मैं आज कर रहा हूँ उससे मैं बेटर कर लूंगा वहां पे. ये कभी नहीं होता. Okay, sir. ठीक है. ये बिल्कुल I will definitely look, sir. राइट. मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है. मैं अगेन, तुम उसको गलत फीडबैक की तरह मत लेना. ठीक है. मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं ये एक सत्य है जीवन का. मैं ये बता रहा हूँ. उससे बेटर हम अचानक से नहीं हो जाएंगे. हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ओके. And in the recent times, linking Aadhar with bank accounts was made mandatory, which had many opposing voices. ये तो खैर बहुत अच्छा है, but in essence बहुत बढ़िया usage है ये. Very nice. It is indeed a great step, as it has many advantages that the lower common pool is unaware of. ये लाइन में कोई changes नहीं. बहुत बढ़िया लाइन है. Aadhar project has 2 different dimensions. ये एक summarize कर दिया हमने पहली लाइन में, फिर हम इसको आगे कर रहे हैं. This is also a good way of doing it. The first one is that it is लिंक टू नेशनल सिक्योरिटी. देखो, फर्स्ट वन ये सब ना बहुत कॉमन यूजेज है, तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट वन की जगह. दी प्राइमरी भी बहुत कॉमन है एक्चुअली. सो फोरमोस्ट, यस, करेक्ट.
foremost perennial concern is that, ऐसे बोल दो यहाँ पे देखो, the perennial concern, perennial लगा दिया तो concern लगाना पड़ेगा, is that perennial का मतलब वो जो हमेशा से चला आ रहा है ना, Yes. हमेशा से, is that it is linked to national security and the more recent one is that one is the developmental concern. Okay. So यहाँ पे एक प्रॉपर वो स्ट्रक्चरिंग हो गई है, पेरेनियल वर्सेस द रीसेंट वन. जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया ये और थोड़ा इजी हो गया, वैसे सिंपल नहीं रहा अभी. नहीं, सिंपल ये पहले भी नहीं था, पहले भी इट वाज गुड, पर वो वर्ड बेटर हो गया, अब ये थोड़ा बेटर हो गया. राइट, अब ये थोड़ा बेटर हो गया. राइट, बोथ द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अब बोथ द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये कोई ना अननीडेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है. विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट योर कंसर्न, ये अननीडेड इंफॉर्मेशन को हटा दो. An Aadhar enabled bank account can be used by the beneficiary to receive multiple welfare payments. Okay. Can be perused बोल दो, perused तो reading होता है, sorry. By linking the Aadhar directly with the bank accounts, money can be directly deposited to right individual without the nuances लिख दिया. तो अच्छा तो है, और कुछ improvement मेरी तरफ से इसमें नहीं है, but एक conclusion चाहिए, ठीक है. And you should have a you should add more modifiers. Basically, that's my feedback. Add more modifiers and adjectives and adverbs. Okay. Yes. Okay. Let me move on to the next one now. Rohit has sent his. Guys, what happened to the others? क्या कर रहे हो guys? Work from home करते करते थक गए? Okay. This is Rohit. यहाँ पे सब लोग वर्किंग है ना, मोस्ट प्रोबेबली. No, sir. No. Fresher. Due to the efforts of government of India, Aadhar has become the most famous and widely accepted identification document today. ठीक है, great, बढ़िया लाइन है, पर थोड़ी सी सिंपल है, ठीक है. इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे. Due to the incisive efforts of the government of India, incisive and consistent साथ में नहीं आ सकता है. incisive and consistent, हाँ हो सकता है, right? Incisive and consistent है ना. Yes. बढ़िया. Consistent efforts of government of India to include a marginalized society in the in the fast growing economy. Aadhar has, so due to the incisive and consistent efforts of government of India to include marginalized society in fast growing economy, Aadhar has become the most famous and widely accepted identification document today. Great. Aadhar being linked to the bank accounts is a good move. नहीं, ये टी टाइम कॉन्वर्सेशन बन रहा है. समझ रहे हो? तो तुम ये टी टाइम कॉन्वर्सेशन की आदत छोड़ दो. गुड मूव, वुड मूव, ये सब हम लोग तो नॉर्मली होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है. Yes, sir. So is a step, is a Great initiative. giant leap, ठीक है. giant leap बोल दो, हाँ, great initiative बोल सकते हो, giant leap बोल सकते हो. Yes, sir. Yes. Unique has been, okay, ये प्रणीत का है. प्रणीत, एक पैरा नहीं और भी भेजो. Okay, good. So giant leap, mainly because it helps in organization, identification and security. अच्छा गाइस, मैं तुमको आज एक चीज सिखाता हूँ, ये करके आओगे तो बहुत इंप्रेस्ड होंगे जो भी पढ़ेगा, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. हम जब भी A, B, C बोले उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट इज कॉल्ड अ सीरीज, ठीक है. इट इज कॉल्ड अ सीरीज. एग्जांपल A, B, C, 1, 2, 3 सब सीरीज है, ठीक है. जॉन, मेरी, जेन, ठीक है. इनको हम सीरीज बोलते हैं. अगर मैं सिर्फ बोलूं जॉन एंड मेरी तो ये सीरीज नहीं है, नॉट सीरीज, ठीक है.
John and Mary is not series. समझ रहे हो ना? Yes. Yes. राइट. सीरीज सिर्फ ये तीन है क्योंकि मोर देन 2 एलिमेंट्स चाहिए और यहाँ पे लास्ट में हम डालते हैं एंड. यही करते हैं हम. Yeah. Yes. Yes, sir. तो इससे बेटर मतलब यहाँ पे एक चीज समझना कि ये एंड से पहले जो कॉमा है ना ये लगाया जाता है. ठीक है. Yes. तो एंड से पहले कॉमा लगाना बहुत जरूरी है इन प्रॉपर वैलिडिक्टोरियन इंग्लिश. ठीक है. और वो चीज मतलब वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा जब तुम लिख के आओगे, अगर लिख के आए तो. ठीक है. Yes. तो अगर तुम नहीं लिख के आते हो तो कुछ गलत नहीं है. इट इज नॉट रॉन्ग बट इट विल नॉट ऐड टू द इंप्रेशन. ठीक है. Yes. दैट्स द पॉइंट. ये कॉमा नॉर्मली नहीं लगाया जाता है पर तुम ये कॉमा लगा दिया. ठीक है. ऑलराइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट लाइन, mainly because it helps in organization, identification and social security. It can also help significantly in reducing corruption. ठीक है. It can also significantly help. It can also help in reducing corruption significantly. Significantly का placement कहाँ होना चाहिए? क्या लगता है? ये जो help के बाद significantly अगर मैं लगाऊं तो वो एक सही मतलब वो दे रहा है मैसेज. Anyway, तो ठीक है. मतलब इस लाइन को और कॉम्प्लेक्स करो. इट कैन ग्रेटली असिस्ट. हेल्प से असिस्ट पे जाके कुछ नहीं होगा. इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट. बोलो. It can greatly contribute in government's motives to curb corruption. Reducing corruption, yes. देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये एक स्ट्रक्चर है जिससे तुम कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन याद करना. ठीक है. जब भी तुम ऐसे लिखोगे, मेरा एक और फीडबैक है, ये लिख लेना. ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए होगी. ठीक है. Yes, sir. सो जब भी तुम ऐसे लिखोगे, रिमेंबर कंजंक्शंस. एंड, बट, नॉर, नीदर, एवरी, ईच, ये सब कंजंक्शंस होते हैं. Yes, sir. अब कंजंक्शन से तुम कभी सिंपल सेंटेंस बना ही नहीं सकते. तो हर सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. सो ये एक तरीका है करने का. जैसे इट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग. इट कैन नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट significantly in reducing corruption, but also go a long way in developing a nascent diaspora of budding economists or budding growth culturists, whatever it is. Not only but also. All the bank accounts under a person's Aadhar number can be listed and the details of the accounts retrieved easily and will help prevent dealings of those who run shell companies. ठीक है. तुम काफी एक्सट्रीम ओपिनियनेटेड हो इस पे, तो विल वगैरह यूज करना इज अ एक्सट्रीम ओपिनियन. ठीक है. ध्यान रखना. जब विल यूज करते हैं हम, दैट मींस आई एम डैम श्योर कि ये होगा. राइट. सो वो चीज थोड़ा सा डिप्लोमेसी रखोगे ना तो अपने ही जाल में नहीं फंसोगे फिर. तो विल की जगह यहाँ पे बोल दो विल गो अ लॉन्ग वे टाइप्स, है ना, या विल कंट्रीब्यूट या माइट हेल्प, है ना. Yes, sir. Also, the added rule of the bank account being frozen if the account holder does not link their Aadhar is another good step. This will help expose. Another नहीं होना चाहिए था. Is another good step? नहीं, ठीक है. Also and another, yeah, like. मतलब नहीं बोलो. अरे मैं सिर्फ अपना ही point of view दिए जा रहा हूँ यार. I'm not a Hitler. Go for it. I'm just saying that I have spotted my mistake. Like I've written also and another. Like it's not correct. Also कहाँ पे है? Also, the added rule is enough. Very good. I missed it. Very nice. The added rule of the bank account being नहीं वो ठीक है. अरे वो ठीक है. दोनों के मीनिंग अलग हैं. देखो, that's not a problem. Also is a transition from this entire point to this entire point. Okay. Yes, sir. Right. And another good step is यहाँ पे जो good step था उसका another good step. Do you understand me? So that's Yes, not sir. a problem. That's not a problem. ठीक है. This will help expose the bank accounts of corrupt people. With the linking of Aadhar with bank accounts, it will help. It will become easy to trace who might be involved. Check नहीं किया था? No, sir. Like. Very good. Talented Indian Idol friend might be involved in fraud activity in case Aadhar information and bank account information mismatches. Along with these, some other benefits some other benefits are that people can now receive direct credit of other government subsidies like welfare funds, pensions, scholarships. Guys, abbreviations बिल्कुल मत लिखना. ठीक है. etc पूरा लिखना है.
ठीक है, या फिर एट आल, देयर इज वन मोर, एट आल, या फिर एंड सो ऑन, ठीक है, सो एट आल, सो एंड सो ऑन, एटसेटेरा पूरा लिखना है, ठीक है, इनटू वंस अकाउंट. ऑल्सो ऑनलाइन पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई, ब्रैकेट में एब्रीविएशन, जब कोई मैंडेटरी एब्रीविएशन यूज करना हो तो ब्रैकेट में डाल दो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. अगर नहीं पता हो तो उसको लिख दो, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर दीज आर गुड हैबिट्स, ठीक है, टू डू, विच शोज डेडिकेशन इन योर एसे. तुम्हारे ऐसे में अगर डेडिकेशन लिख देना तो उसका भी स्कोर मिल जाएगा. सर जैसे फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म तो हम नेट से देख के तभी डाल सकते हैं ना? नहीं, पर अगर तुम लिख रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास तो है ही ना. हाँ राइट सर, बट जो मतलब वैट होगा उसमें कह रहे हैं कि वो प्रॉक्टेड नहीं होगा, गूगल फॉर्म्स पे होगा. अच्छा, वो गूगल फॉर्म्स पे होगा. हाँ अच्छा, सर मेरा IMT का भी सेम था. नहीं नहीं online. नहीं नहीं, इसका मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं जाके सीधे ऑनलाइन निकाल लूं अब्रीविएशंस, ये पूछ रहे हो? हाँ. काफी रिस्की मूव होगा वो. अच्छा, उनका सिर्फ गूगल फॉर्म्स होगा, देयर विल बी नो कैमरा? नहीं, कैमरा और वीडियो होगा, बट सर उनको लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ा दिखेगी, फिर बस लैपटॉप ऑडियो स्क्रीन वीडियो शेयर नहीं होगा. होगी? नहीं, बस ऑडियो वीडियो होगा. So even if the screen is being shared, we can use our phone also. मोबाइल? हाँ यार मत करना ये सब यार. चलो ठीक है, ये सब देखो, अगर पहले ही पूछ लेना मॉडरेटर से, हो सकता है कि नहीं, ठीक है, इज इट ओके, इज इट लीगल, यू नो, ये सब. वैसे तो मैं करूंगा भी नहीं, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए. टेक इट, ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम, ठीक है. और एक यूपीआई का फुल फॉर्म लिख के हो क्या जाएगा? असली चीज तो ये है कि ये पॉइंट ही नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है कि नहीं, है ना. यूपीआई पेमेंट्स एक एग्जांपल की तरह होना चाहिए तुम्हारे लिए, कि यू नो डिजिटल पेमेंट्स ऐसे लिखना चाहिए इसको. ये मतलब यूपीआई इज नॉट अ बिग डील ओवर हियर, समझ रहे हो? सो डिजिटल पेमेंट्स तुम्हें बड़े पॉइंट्स लेके आने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. जैसे कि हर्ष से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हैं यहाँ पे. उसने सीधे देखो किसकी बात करी, टेररिज्म की बात करी, है ना. कहां से कहां गया वो जंप. एंड इफ आई टॉक अबाउट यू नो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आधार, यू कैन टॉक अबाउट प्राइवेसी, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, you can talk about you know a lot of other things, right? Government based surveillance you can talk about, ठीक है, local political parties किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करेंगे डेटा को, राइट. सो वो चीज है. आधार फ्रॉडुलेंट, अगर फ्रॉडुलेंट यूजेज होता है तो उसमें क्या होगा आधार का. तो ये सब बड़े पॉइंट्स हैं, हम लोकल पॉइंट्स में ज्यादा नहीं घुसेंगे. ऑल्सो ऑनलाइन पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई आर नाउ पॉसिबल, ये एक सोशल सर्विस वाली लाइन हो गई है, इसका कोई मतलब वो नहीं है, डेटा है बस, और कुछ नहीं है इसमें. are not possible due to the linking of Aadhar. तो इसीलिए abbreviation is not a big deal. ये हटा दो दिमाग से, abbreviation is not a big deal. But abbreviation use नहीं करना बिना without reference is a good practice. Okay, now in conclusion, Aadhar linking is a very good move by the government of India. Good move. अरे वाह, chess खेल रहे हैं हम लोग हैं. Good move. Okay, because of all these reasons and with careful planning and execution, this move can prove to be very beneficial. Very nice. तो बहुत अच्छा लिखा है, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज है, need to complicate it more, ठीक है, by using adjectives and adverbs, right? तो सब एक बात बहुत अच्छी है, तुम लोग बहुत कोहेरेंट हो, ठीक है. अभी तक मुझे ऐसा एक भी नहीं दिखा जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ. सो प्रणीत का देखते हैं जरा. प्रणीत इज Pranit, are you there? Can you hear me, buddy? Yes, sir. Yeah. So UID or unique identification numbers have been used by organizations and institutions for decades. Okay. A bank assigns क्या है assigns के बाद customer ID to all its clients, and a college assigns a unique roll number to each of its students. अच्छा, तो ये UIN के बारे में बात कर रहे हो. Have been used by organizations and institutions for decades. A bank assigns. In 2009, the government of India introduced the Aadhar scheme to provide a UIN to each of citizen. अच्छा, each of the citizens होगा या citizen होगा? Citizen. The Aadhar can be considered. तुमने ये लास्ट मिनट में लिखा है ना, सच बोलना.
यस सर, जब आपने टाइम वर्ड बोला था तब मेरा सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ हुआ था. वाह वाह, clap clap guys, clap. The Aadhar can be considered as a counterpart to the social security number scheme implemented in USA. Very nice analogy draw किया है, and to similar schemes that have been adopted by other nations. ये क्या है? ये कोई लॉजिकल लाइन है? ऐसी लाइन बढ़ाने के लिए लिखी है तुमने? ये तुम बोल रहे हो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ काउंटर पार्ट टू द सोशल सिक्योरिटी नंबर स्कीम. कैन भी बोला है ना तुमने, राइट? अब वो इसी उस सिमिलर चीज का तो काउंटर पार्ट होगा ही. डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिकल फ्लॉ इन इट? यस सर. राइट, सिमिलर किसी भी चीज का तो काउंटर पार्ट वो होगा ही. सो दैट्स व्हाई यू विल रिमूव दिस लाइन, एंड वाला यहीं पे फुल स्टॉप मार दो. देखो, लाइन बढ़ाने के लिए मत बढ़ाया करो. थिंक इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर. ओके, ऐसे क्या लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल का मतलब ये है कि लैंग्वेज इंप्रेसिव होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि वर्ड्स बढ़ा रहे हैं. As more citizens now have an Aadhar number, the Indian banking system mandated linkage of bank accounts with Aadhar. अब देखो, कॉमा का रूल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए. ठीक है, ये कंप्लीट क्लॉज है. So this was achieved via the KYC policy. This linkage has made conducting online transactions a lot easier for customers and has also made it easier for banks and governments to keep track of individuals with multiple bank accounts and reduce frauds. ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है अभी, है ना? तुम्हें कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा इसको. और गेटिंग माय पॉइंट? टू बी द क्रीम यू कांट राइट लाइक दिस. दिस इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल लैंग्वेज. मतलब ठीक है सब, आई कांट मेक आउट एन एरर, बट देयर इज नो क्रिएटिविटी. डू यू अंडरस्टैंड मी? Yes sir. On the other hand, many have raised concerns with regards to the security risk posed by having a one point of access to all sensitive information of an individual. The Aadhar system is not infallible. Good. First good word. The Aadhar system, first नहीं, अच्छे थे, counterpart वगैरह ठीक ठाक था, पर ये बेस्ट है अभी तक, है ना? So the Aadhar system is not infallible and has been hacked by nefarious organization. Very good, very nice in the past. Another argument which has been put forth is that many, ये proper usage है. ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम शो ऑफ कर रहे हो किसी भी एंगल से. ठीक है, अगर तुम्हें वो लग रहा होगा कि मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि शो ऑफ लगेगा, तो भूल जाओ. एक एक दो ऐसे वर्ड्स चलते हैं, कम से कम 3-4 एक पैरा में. यू गेट माय पॉइंट, राइट? So nefarious organizations in the past. Another argument which has been put forth is that many cases of fake Aadhar numbers being generated have come to light. This puts into question the fraud detection capabilities of the scheme. Scheme word बहुत बार हो रहा है, और scheme word ना एक negative sense में भी use होता है, तो इसको avoid करो. Capabilities of the platform या of the initiative, है ना? ऐसा कुछ. तो और fake word जो है fraudulent बोलो. अच्छा, फेक फ्रॉडुलेंट डिटेक्शन क्या होता है? अच्छा, फेक आधार नंबर्स, ठीक है, फ्रॉडुलेंट आधार नंबर्स. फ्रॉड हो चुका है, सो तुम बोल सकते हो यू नो परफिडियस आधार नंबर्स. परफिडियस इज फेक. ठीक है, राइट? सो परफिडियस, यस, परफिडियस. नाउ द थिंग इज, अच्छा लिखा है, पर वही कॉम्प्लिकेट करो चीजों को. और Let's go for the next one and the last one, then you can all go home. ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों को काफी पका दिया है आज. ठीक है, just a moment. I mean you are at home. I mean metaphorically you can go home. Just a moment. Let me take the last one, which is in the Zoom chat. So okay, so actually this was the last one. Okay, Dipanshu, right? This was the last one, right? Is there anything else? चाइल्ड्स प्ले की तरह ट्रीट मत करना. नहीं, प्रणीत का पढ़ा ना मैंने अभी गाइस. Yes sir. ओके Yes, ओके. तो फर्स्ट लाइन सेम कैसे हुई है इनकी? अच्छा, आइडेंटिटी नंबर व्हिच केम, गॉट इट. Just a moment. Dipanshu, are you there? Can you hear me? Yes sir. Yep. So Aadhar is a 12-digit unique identification number which came into limelight in order to connect each and every citizen of India. Okay, great. Linking Aadhar with bank accounts reduces the involvement of middleman या middlemen? Middlemen. Right. अच्छा,
and a lot of paperwork which, यहाँ पे which से पहले हमेशा कॉमा, नहीं तो which वर्क को रेफर कर जाएगा। समझ लो कितना बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कॉमा के ना होने से। देखना इस बात को समझो। अभी अगर मैं यहाँ कॉमा ना लगाऊं ना, तो ये जो which है, this refers to work। क्या तुम वर्क को रेफर करना चाहते हो? नो सर, नहीं, वर्क को ही रेफर करना चाहते हो मोस्ट प्रोबेबली। देखने दो मतलब सर बोथ द थिंग्स, मिडलमैन एंड पेपर वर्क। राइट, इन दैट केस तो कॉमा लगाना ही पड़ेगा, करेक्ट? राइट सर। राइट। So middleman and a lot of work which had to be done if linking was not the case। नहीं, ठीक है, तो तुम वर्क को ही कर रहे हो, मिडिलमैन को नहीं कर रहे हो। डन किसको बोलोगे? वर्क को ही बोलोगे ना। तो कॉमा तुम लगाओगे इसीलिए नहीं कि वो है विच के साथ कॉमा लगाने का कन्वेंशन है, ठीक है? विच के साथ कॉमा लगाने का कन्वेंशन है, ध्यान रखना। इफ लिंकिंग वाज नॉट द केस। ऑल्सो कैश/मनी, ये मत करना, ये बहुत ही वो लगता है। कैश और मनी लिखो, will be directly transferred to the desired recipient account, which is direct benefit transfer। बहुत अच्छा करंट अफेयर का पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, है ना? डायरेक्ट डेबिट या बेनिफिट ट्रांसफर, क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट टू फार्मर कैश, कुछ ऐसा होता है, कुछ एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। सर वो नीचे मेंशन किया मैंने। ओके, डायरेक्ट डेबिट टाइप्स देखते हैं। दिस लिंकिंग विल आल्सो रिड्यूस द मनी फ्रॉड्स एंड स्कैम्स व्हिच रिड्यूस द मनी फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। मनी फ्रॉड्स क्या होता है? तो रिपीटेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड पर्सन स्कैम्स व्हिच यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट, बट नाउ एज आधार हैज, तुमने भी लास्ट मिनट लिखा है ना, all the details of the person। Sir, I had first written in copy and then I typed। टाइप क्यों किया? तुम मुझे पढ़ के सुना देते। सर फिर उसमें फिर आपका फ्लो नहीं रहता। अरे ठीक है, इट्स ओके। मतलब तुम फ्लो की बात नहीं छोड़ो ना, तुम पढ़ के सुनाते तो कम से कम वो रहता ना कि तुमने एक्चुअल तुम्हारे कैपेबिलिटी क्या है। ये तो कैपेबिलिटी को दर्शाता ही नहीं होगा तुम्हारे। लेट्स सी। द गवर्नमेंट will give various incentive schemes such as scholarships, pension and health benefits are proposed. A direct cash transfer program has been started which will reduce the payment inefficiencies. As India consists of around 69% population who live, अच्छा guys देखो कितनी बड़ी fallacy है। This mistake can be made by anyone, ठीक है? पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। Population को हम who से बोल सकते हैं क्या? Tell me। नहीं ना? We can't refer to that live। Yes, that live, and percent around 69% of person population that lives होगा, वो भी इसको singular treat करना पड़ेगा क्योंकि populations तो नहीं है। Do you understand me, buddy? Yes sir। Yeah, in rural area and as almost half of Indian population is engaged in agriculture। अब देखो यहाँ पे तुमने सही कर दिया है, is बोला है तुमने, ठीक है? Engaged in agriculture and its allied sectors। This linking is a very, यहाँ पे कॉमा नहीं, फुल स्टॉप, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं, एज से शुरू किया था। एज इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ दिस, ठीक है। This linking is a very helpful tool for all of them to, as they will get their payments timely, ठीक है? तो सिंपल है, ठीक है? I need some complications, that's the important part। वही आज का एक फीडबैक है प्राइमरी, तुम लोग समझो कि it is not about describing processes, ठीक है? आधार के बारे में नहीं लिखना है तुम्हें। आधार is not the simple thing। आधार से डिराइव करना है बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है? तो वो चीजें हैं। फॉरमोस्ट इट रिमेन्स, बट वेग नहीं बनना है और डिविएट ज्यादा नहीं करना है। इट रिमेन्स स्टिल अनक्लियर वेदर लिंकिंग आधार poses a threat। लिंकिंग is poses a threat to privacy or not, ठीक है? Also nothing can be said on the duplication of biometrics at last। तो also nothing can be said। तो एक बात बताओ, तुम अपने ऐसे को, अगर मैं तुम्हें एक स्केल दूं, ठीक है, 0 to 10, 10 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वर्डी, ठीक है, 0 एक्सट्रीमली सिंपल एंड प्रोसेस ड्रिवन, तुम कितना स्कोर दोगे अपने आप को? कैन यू हियर मी? यस सर। या तुम कितना स्कोर दोगे? सर कैन यू रिपीट दी? Yes, 10 मतलब कि extremely complicated, it is difficult almost to the point that it is difficult to understand, ठीक है? And 0 being the score for extremely simple, तुम अपने आप को कितना स्कोर दोगे? सर ओनली इन
this is the sole parameter. हाँ नहीं नहीं ये स्कोर नहीं है, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर अगर कॉम्प्लेक्सिटी सोल पैरामीटर है तब तो सर 2 नंबर. और क्रिएटिविटी वाइज सर आउट ऑफ 10 सर 5. ओके या क्रिएटिविटी वाइज तो मैं भी तुम्हें दूंगा, ठीक है, पर Sir, actually, I was having one doubt when you gave Yes. this topic, and my doubt was ki as the topic was is linking Aadhar with bank accounts is a good idea, and you said to write around 150 to 200 words. yes. So my doubt was ki first, like other other people firstly described Aadhar and they talked about pros and cons of it. So my doubt was ki should I write this or should I directly write about Aadhar linking with bank account, because we had to also see the word limit and the topic was linking Aadhar with bank account. So that's why after the first line I directly started with this. I didn't mention about the other aspects of Aadhar, why it was introduced and what are the pros and cons of it. So sir, what I would have done. हाँ This, मैं तुम्हें बताता हूँ देखो तुम्हारा सेंट्रल थॉट प्रोसेस आधार पे है, ठीक है, आधार इज नॉट द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं गाइस. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग अभी नहीं है आई रियली फील सॉरी फॉर देम. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ. देखो द थिंग इज आधार क्वेश्चन का पॉइंट ही नहीं था. आधार लिंकिंग विद बैंक अकाउंट्स इज द आइडिया. सो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज फ्रॉड एंड प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. डू यू गेट माय पॉइंट? yes sir. Yes, sir. तो आधार इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग दैट पॉइंट होम. तो आधार के ऊपर सेंट्रल कर देना और आधार इसलिए यूज होता है, आधार इसलिए यूज होता है, वो कोहेरेंस से हट जाता है. तुम्हारा पॉइंट सेंट्रल आइडिया किस पे अराउंड रहना चाहिए, और जो मैंने बोला था ऐसे का हर लाइन उसी पे सराउंड होना चाहिए, है ना, ये मैंने बोला था राइट शुरू में. वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड वो. सो द थिंग इज दैट, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ पे चुके हैं हम. Yes, राइट. ओके सो दैट्स द पॉइंट. बट बहुत ही अच्छा एफर्ट है एंड आई विल डेफिनेटली आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि तुम्हारी बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश बहुत अच्छी है तुम लोग, ठीक है, पर तुम लोग प्रैक्टिस्ड नहीं हो, समझ लो. सो वेल प्रैक्टिस नहीं हो तो एसेज लिखो, जितने हो सके एसेज लिखो एंड यू विल गेट देयर, ठीक है. जितने हो सके नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी नहीं. इसमें से ये जो टॉपिक का लिस्ट है ये मैं टेलीग्राम पे अभी सब भेजने वाला हूँ बैठ के एक एक करके. इसमें से उठाओ एक दो करके और ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन दैट टॉपिक टोटली. एंड ऑल्सो फोकस ऑन कि कौन रिव्यू कर रहा है. रिव्यू किसी से ऐसे से करवाना जो तुम्हें ग्रामर, वोकैब और पैरा डिवीजन और स्ट्रक्चरिंग पे फीडबैक दे सके, ठीक है, प्रॉपरली. मतलब खुद ही रिव्यू मत करने लग जाना उसको. यू शुड फाइंड समवन टू रिव्यू. आई एम देयर, यू कैन सेंड इट टू मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम, ठीक है. बट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद मी, आई अंडरस्टैंड, फाइंड समवन हु कैन डू इट, ठीक है गाइस. राइट, चलो वी विल बी बेटर एंड वी विल डू ग्रेट. और क्योंकि वैट, ये ध्यान रखना, फाइनल डेंजर मोमेंट में बता रहा हूँ, क्योंकि वैट का स्कोरिंग पैरामीटर्स आउट नहीं करते हैं, इट इज केप्ट टोटली प्राइवेट. वी कैन नेवर से वेदर you will get the admission or not based on your VAT, ठीक है. तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, इसीलिए बेस्ट दो वैट को, प्राइमरी प्रायोरिटी रखो किसी भी कॉलेज में. अगर IIMs टारगेट है तो डेफिनेटली, और उससे नीचे वाले में भी बहुत सारे में भी वैट इज टेकन. वैट इज प्राइमरी, ठीक है, वैट इज देयर इन एनी MBA एडमिशन. So that's the point. चलो guys, I hopefully you like the class and hopefully I bored you enough to death today, ठीक है. Yes. Sir, will there be another class regarding punctuations and small modifiers also? Yes, definitely we will have. वो चीज मुझे बात करनी पड़ेगी एक बार सर से, पर let's organize a grammar based class, ठीक है. Yes, तुम लोग के लिए, ठीक है. I will do that. I will ask sir today, Ramanujit sir. And sir, do also share the link that you said, because I will share the entire PPT, ठीक है. I will share the we entire would PPT. also like to see the the solved VETs. Yes, definitely. I will share the entire PPT. The last slide has all the links. That's what you are asking for, right? Yes sir. Yes. Okay. Right. Chalo, have a good night, guys. Thank you, sir. Eat well, drink well. Drink well. you, sir. Okay. It's not Thank a you, sir. double meaning thing. Yeah. Bye. Thank you, sir.